Anisha, also known as Minu, and you're watching me on the Curlicious Minu. So आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक कोरिएंडर चिकन। जनरली आप देखोगे कि गार्लिक कोरिएंडर चिकन हमेशा हरा रंग का रहता है बिकॉज उसमें धनिया पत्ते की पेस्ट बना के डालते हैं। बट आज हम धनिया पाउडर और धनिया लीव्स यूज करने वाले हैं, अक्खे के अक्खे, एकदम बारीक कटे हुए। सो उसकी वजह से वो नॉर्मल येलो रंग के दिखेंगे बट उसमें प्रॉपरली धनिया की टेस्ट आएगी। सो लेट्स गेट इनटू द रेसिपी। ये बहुत ही सूदिंग रेसिपी है। कभी गर्मी के टाइम पे या ज़्यादा मसाले यूज़ करने की वजह से आपको अगर एसिडिटी हो रही हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। इसमें सारे सूदिंग प्रॉपर्टीज़ है और आपके पेट को ये ठंडा ही करेगा। यहाँ पे हम जनरली जितना ऑयल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ चिकन लेग पीसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जूसी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। जनरली हम 1 टेबलस्पून यूज़ करते ऑयल या फिर 1 टीस्पून यूज़ करते, बट यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। आप उससे कम भी यूज़ कर सकते हो, आप अगर चाहते हो तो आप 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून से भी काम कर सकते हो। जब आप चिकन को पकाने के लिए रखें, मेक श्योर कि आपका ऑयल एकदम हॉट हो और आपकी गैस फ्लेम हाई पे हो। फर्स्ट 5 मिनट्स आपको हाई फ्लेम पे अपने चिकन को पकाना है, उससे आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा और अंदर तक के पकेगा। सो ये थी हमारी सिंपल प्यारी सी गार्लिक कोरिएंडर चिकन की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं देन प्लीज फॉलो माई पेज फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर।